अंतरंगाड़प कार्यक्रम को मु हिमांशु शेखर मिश्र समस्त को सादर निमंत्रण करुच्ची। आज एक अति खुशी दिन आमे सबु मासर 13 तारिख रे यही कार्यक्रम करुचे। अनेक अतिथि आसुचंती मु भी अनेक थर अतिथि मान को डाकी किसी मोर हूँ तो सीनियर हो पारती किसी जनाशुना हो पारती कि आज अतिथि जे सी अनन्य सी अतिथि सियाड़े आसुचंती किंतु मोर बाल्य बंधु आम एकाठी 71 मसीह 11th क्लास पास करूँ बरहमपुर एका स्कूल 50 वर्ष पर प्राय पुणी आमर ये भेट है। ये भितर अनेक कहला भाया ब्रिज तले पानी बही जाइए किंतु आमर बंधुत्व पुणी जागृत होती। आज मु कमोडोर जगदीश महापात्र को मोर अतिथि पाइबा हेतु मु निजक अति गौरवान्वित मन करुच्ची। जगदीश मु तुमको आनुष्ठानिक भाव आम यही संस्था को आज कार्यक्रम को वेलकम करुच्ची। किसी कह आगर जस्ट सर्टकट रे कहबी टिके विषय कहबी। कमोडोर रिटायर्ड कमोडोर जगदीश महापात्र बापा होचंती काशी विश्वनाथ महापात्र, माँ लेट हरप्रिया महापात्र। दिगपंडी पाखरे पानाड़ विलेज रे गाँव निजर पैतृक स्थान कहले कहबी। पिला दिन सप्तम श्रेणी पर्यंत गाँव में पढ़ला ब्रह्मपुर पढ़िया को आसते हाई स्कूल से अष्टम रु हाई स्कूल पढ़ले खलिकोट कॉलेज रे पीयू है। प्री प्रोफेशनल एमपीसी कॉलेज बारिपदा रु से पास कर एनआईटी राउरकेला रु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास कला पढ़ुले से he was awarded as the best all-rounder gold medal तांको दिया हैतला से पाइथिले। एवं गेम रे मध्य से गेम ब्लू एट एनआईटी राउरकेला कोन तांकर थाला सेडा भी से पाइचंती। 32 वर्ष काल तापरे से इंडियन नेवी रे काम करचंती आज जॉइंड एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड फाइनली he retired as commodore तांकर से टेक्निकल ब्रांच रो दैट इज हाईएस्ट पोस्ट जहाँ जानी। पर से नाभाल ले जॉइन कला आम साधारण भाव जानी था नाभाल माने सब समुद्र रे पानी रहिबे किंतु ही ऑप्टेड फॉर नाभाल एविएशन स्पेशलाइजेशन आउे से पर सोवियत यूनियन को जाइथिले हेलिकॉप्टर टेक्नोलॉजी शिखा पर आमर जो मिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे मस्को रे he was for a very long time that he will explain तांकर एक्सपीरियंस एटा सब वर्णना करिवे। तो से तांकर पाठ पढ़ा तो से बहुत भल थिले ता सहित सब खेल सहित बा तांकर स्पोर्ट्स सहित तांकर लिंक भी थिला। तेरे ए सब सहित आज वर्तमान ए अंतरंगाड़ा प्रथमे जगदीश को तांको मोर सुनिबा तांकर से बाल्य शॉर्टकट रे तांकर बाल्य जीवन एवं पर सेकेंड जॉब एंटर करी कौन करछन आपरे हम आगु जीवा। जगदीश मु तुमको वर्तमान आउ थरे अनुरोध करिबी। मु जगदीश बोली कहूची कारण मो संग हिसाब रे I took the privilege आउ तनो लेट अस स्टार्ट। जगदीश तम मोर टन सुनिबु तमरो से पिला बेले किछ अनुभूति आउ छात्र जीवन तापर हम जीवा अन्य। धन्यवाद हिमांशु, थैंक यू। जेते बळे हिमांशु समस्त को सुना जाउ कि मोर होप आई एम ऑडिबल। सुना जाउ सर। हां हां एबे ऑलमोस्ट 52 वर्ष पर हिमांशु संगे देखा हला कोटपेटा हाई स्कूल 71 रु पास कला पर एबे इठी टाटा हरियाणा को जेते बळे आसिली सेठी देखा हला। ओडिसा को आसी कि मते ऑलमोस्ट 50 वर्ष पर मु एबे आसिली इठी। पिला दिन रो कथा कहया को गले मु गां स्कूल रे पढ़ी थली क्लास 7 जाए। हिमांशु जेते मत कहले आसी कि तमे को विषय रे गोटे टॉपिक रे तमे माने टॉक गोटे दबो बोली मु भाबिली कोनटा भलो कहि परिबी। मन आमे माने जनरली कोन आमे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन कहया को गले
जो थे मास्टरी अच्छी से विषय कहले आपण मैंने सब चली जीवे किसी इंटरेस्टिंग लगनी बिकॉज हेलिकॉप्टर टेक्नोलॉजी रे कौन इंटरेस्ट रहिबो सो आई सेड ऑल राइट नेवी विषय रे कहबी मोर एक्सपीरियंस विषय रे कहबी स्पेसिफिक टू मी फ्रॉम ए विलेज कोड आसिकी केमती नेवी रे मन जेमती कहले आगुरु डेस्टिनी आम मन सब केमती नहीं कि जाउची वेरियस जगह को नले मु पनाड़ गाँव बाहरी की नेवी रे टू ए पोजिशन आई वोंट से मु एकदम बहुत सबुठ द ग्रेटेस्ट कली बोली बट स्टिल टू माय सैटिस्फैक्शन लेवल इट इज 100 आउट ऑफ 100 देन नेवी एवरेस्ट एंड योगा जी भी सुनले कह कौन ये टॉपिक दिस आर ऑल माय पर्सनल निजर एक्सपीरियंस विषय रे मु आपण मानकू कहयो चेष्टा करी एंजॉय करिवे बोली भाबुची टिके नुआ कोन ओडे सुनिवे बोली नाउ मो गाँ बहुत वेरी रिमोट इवन आज सेमती अच्छी सब आड़ू चारिआडू नदी सो से मोमेंट बढ़ी आसला माने जे जो पटे रोथांती एमती सब पिला दिन टा बीतला क्लास 7 पर आमर दुनिया थिला खाली गाँटा सेमती जाए बाहर कौन अच्छी कौन नहीं कहीं जान नथिलु सुपरमैन सब बापा था जहाँ दरकार कहीदे से कौटू पेंसिल रबर इरेजर जहाँ भी दरकार से ही जुगाड़ कर एमती चलला तापर बरहमपुर आसलु 11th सरला परे somehow manage first class school रे मध्य इनिशियली गाँव रु आसिक बरहमपुर रे एडजस्ट करवा इट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग आई रिमेंबर जेतबळे की मोर गोटे वेरी क्लोज फ्रेंड एबे क्लोज फ्रेंड किंतु ताकू सेतबळे मु देखुता से तार सॉक्स शू सब पिंदी के आउस्ता है तळे गोटे हैंकी पके की बसता है तो इट वाज काइंड ऑफ यू नो learning process I would say as I see it today so same thing ki challa engineering college re pasla pore first thing is like ragging hota hai seଠି बहुत acha ragging ru banchiya pai seman pacharle somehow coincidentally somebody asked me ode amaro football captain jetala pacharla tu kuch khelta hai हाँ फुटबॉल ओ ही वाज वेरी हैप्पी कि ताकू गोटे किए मिलगला फुटबॉल खेलिया कॉलेज रे सी भाई मु एकदम धुरंधर खेलाइली हिथि बोली किंतु मु फुटबॉल बूट मध्य मोर नथला कि पिंदिबा मध्य मु जान नथली सेबे जाय केबे सो खाली पादरे उडी की खेलुथलु पिला दिन जेन खेलुथलु हला नेक्स्ट डे 6 बजे आ जाना गली 6टा बेलू से पचारला तो बूट कहीं कहले बूट कोडी बूट किछ नहीं कहला खेलियो केमती कहले बस खाली पादरे कुछ सेम अलाउड नहीं किंतु ओनली थिंग आई ऑप्टेड फॉर फुटबॉल इज तम रैगिंग हबनी सेथरे तमे को गोटे टीम रे घुसी गले से कहले सो तापर भाईली नहीं इधर फुटबॉल बूट पिंदी की भागीबी नॉल तो रैगिंग हबो तो फुटबॉल बूट पिंदी के दौड़ीबा आरंभ कली सो एमती है कि कॉलेज लाइफ चलला आई एंजॉय टिल देन टिके टिके एपट सपट खेलुथली बट really I learned and flourished in college engineering college basketball university captain thili football university captain thili एवडा को मु केबे लाइफ रे भाबी नथली एवडा सब हबो बोली क्विकली आपन मन कहूची सो दैट how destiny takes you honestly from nothing no exposure village रे ओडिया मीडियम रे पढ़ी पढ़ी एनआईटी राउरकेला जोटा जी आरईसी थिला सेते बेले सेठी जाई की स्पोर्ट्स रे देन यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी कैप्टन नली गेम्स ब्लू बेस्ट ऑलराउंडर amongst 220 students from all over India so that is what I am trying to कहवा पे चेष्टा करूची कि any common anyone जे भी just be sincere and devoted जो काम करूच you can achieve ठीक है आगु आपन कहले डेस्टिनी कथा आरंभ करथिले हमें पूरा आई बिलीव इन डेस्टिनी सेज वे मो टॉपिक होची कि नेवी एवरेस्ट एंड योगा को जिनसटा मु के भाबी नथली एडा सब करिवि बोली बट आज मु करूची बिकॉज ऑफ डेस्टिनी प्रॉब्लम कमिंग बैक टू माय बेसिक इंट्रोडक्शन प्रॉब्ली केते जण जानि पाथिबेनी मोर बैकग्राउंड रु दी जण कोकेई थिले जणे
डिस्ट्रिक्ट जज एक रिटायर कले विघ्नेश्वर महापात्र आउ जने कृष्णचंद्र महापात्र चीफ इंजीनियर एक रिटायर कले मो पीयूषा थिले शिव कुमार पंडा आई एम जस्ट गिविंग ऑल द रेफरेंस मे बी आपण मान भितरु की का जानि थाई पारंती से भितरु ससुर थिले प्रभाकर नंद इंग्लिश प्रोफेसर थिले सी तो एमती है कि चलला लाइक तापरे हाउ डू आई जॉइन नेवी कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ इट मु केबे कॉलेज रे एनसीसी रे मध्ये नथिली नथिंग हमर जने लेक्चरर थिले कनक पटेल बोली सी थिले हमर एनसीसी इंचार्ज हमर 4th ईयर रे जतले नेवी वाला आस्थिले कॉलेज को सिलेक्शन पई मु से जो मो ना मध्ये देई नथली तांको कि मो इंटरव्यू पई बिकॉज़ मो सेथरे किछि नथिला के जाय आई थॉट जे एनसीसी रे अछंती कि कोथरे अछंती नेवर मु थिली सेथरे एनसीसी रे सो ना मो फैमिली बैकग्राउंड रे के अछि नोबडी वाज इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस क्लोज टू इट आल्सो समस्त पढ़ा पढ़ी करके इंजीनियर बनाओ डॉक्टर बनाओ सेमती तो 4th ईयर रे बट सी जने रणजी ट्रॉफी प्लेयर थिले कनक पटेल सो मु खेलु थाए सी जानि थांती आमे क्लोज तापरे फर्स्ट ईयर इंटरव्यू सरला पर से मते कहले कि आसिलु ने इंटरव्यू पई नेवी रो कहली सर नेवी को मु को जॉइन करबा नहीं किसी कहले नहीं नहीं सेतबेले सब इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे आसे बोली को थांती कहली ठीक अछि अच्छा काली समस्त को सरला पर यू कम जस्ट फेस देम कहली ठीक अछि गली सेठी बसली से माने कोन कोन खेलु छु खाली पचारले से माने जी भी आस्थिले फुटबॉल बॉल यूजुअल देन माय नेम वाज इंक्लूडेड काई माने तमे गले मध्ये तापरे ओडे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम थाए सेटा को क्लियर करिया दरकार ताले यू आर सिलेक्टेड अदरवाइज प्रोविजनली सब भोपाल गलु आमे 18 जण सेथरो आमे 3 जण सिलेक्ट हलु इलेक्ट्रिकल रो मु जणाई सेथरो 2 जण मैकेनिकल रो थिले इलेक्ट्रिकल रो मु जणाई आसी गलु तापरे फाइनल ईयर 750 रुपीस सेतळु को नेवी दबा को आरंभ कला तो इट वाज हेला फेला बहुत पैसा सेतळे 750 रुपीस पर मंथ माने हॉस्टल रो सब पढ़ा पढ़ी सब खर्च होता है अराउंड 200 रुपीस तो बसे पैसा मिलला पर देने से तो ठीक अछि जॉइन कर जीवा नेवी जो मन करितले तांको पचारली नेवी रे केमती सेवन जो गेलो नेवी तो पई नेवी टा बनची जंती काइंड ऑफ इंप्रेशन से बंदले के माने से माने उदे वर्ष 2 वर्ष स्पेंड करतिले सो एकेडमी लाइफ और टिके ट्रेनिंग एम सब देखतिले जोथरे की से मान जानितले मु खेला खेली करछ तो ठीक अछि सो दैट इज हाउ I landed up in Navy. But एते दिन परे एते की सर्विस कला परे आई मैं कहि परिबी कि जब मु टिके पचरिबी हां नेवी रो तमे केमती एविएशन प्रति केमतो अट्रैक्शन केम देला आई एम जस्ट टेलिंग हां जल रो आकाश को जिया पे जो जन सो ताल से जाने हो चाहिए करेक्ट सो तबरे नेवी जॉइन कला परे जी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इंजीनियर हिसाब रे मु जॉइन कली अच्छा इलेक्ट्रिकल जॉइन कले जी भी नेवी जॉइन करिवो ताको शिप मेंटेनेंस करिवा पई बाध्य कंपल्सरीली तुमको सेठरे क्वालिफाई हवा को पड़िबो ता परे तमे ऑप्ट करि परिवो एदर अंडर वाटर स्पेशलाइजेशन सबमरीन और एविएशन ए दीटार और यू कैन रिमेन इन जनरल मरीन जोडा को शिप कहंदी सो सेइतरे मोर इनिशियली इज बेसिक ट्रेनिंग शिप क्वालिफिकेशन सरला परे immediately I opted for mu actually Calcutta रे थिली सेठी 1982 रे जोठी की जो union activity was very high they were not allowing us to go anywhere close to it so it's not a very happy stay there GRAC रे ship build होतला तापरे I said नहीं किसी करियो को हो जदी I have to get out from here so aviation को opt करी सो एविएशन मु जॉइन कली सेठी कोचिन अगेन ट्रेनिंग पाई गली हमर फर्स्ट स्पेशलाइज कोर्स नेवी रो सेबे जाय समस्त एयर फोर्स को जाई ट्रेनिंग है की आवस्तांती मु गली फर्स्ट इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइज एयर इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन कोर्स टिके इंटरफेयर कर सर हां कोन सर साउंड टिके बहुत कम आसी बोधे माइक्रोफोन टा टिके डिस्टेंस कम अछि सर All right now
या ऑल ठीक अछि मु उठेई कहू ठीक अछि एबे हाँ हाँ सर सब हाँ सर हाँ सो तापरे मु एविएशन स्पेशलाइजेशन कोर्स पई जॉइन करली सेठी कोर्स अगेन कॉन्फिडेंटली आई टॉप द कोर्स सेठ मोर जहाँ जोटा कि मु ऑप्ट करिवार थिला आई ऑप्टेड फॉर रशियन हेलीकॉप्टर्स कई माने बेसिक ट्रेनिंग वाले मते सेटा भल लागु थाए तो गोवा गली सेठी तापरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सरला परे इमीडिएटली and after that I was married February to 1985 I was married so goa immediately घर मिलु न थाए एपट सेपट की चलथलो 15 दिन का घरे मासे का घरे नेवी रे सी गोटे बहुत बढ़िया कि आपन को चिंता करिवा दरकार नहीं ऑफिस वाला सब रोस्टर बने दिसंद कि छुट्टी जीवो ता घरटा मते मिलिबो सो सेमते ही कि चल थाए wife was new to navy is a different culture altogether especially for the ladies कई माने आमे ऑफिस गला पर से माने मध्य पार्ट ऑफ नेवी ओनली सो बहुत जिंस करबो को पड़े से मान को आपन को भल लागे न लागे जहा मध्य ऑटोमेटिकली आपन मन को से भीतर को टणा ही जाए सेथरे सो सीए पूरा बरमपुर ओडिशा बैकग्राउंड रो ना हिंदी इंग्लिश मते भी आसनो थे इनिशियली द वे आई वाज ओके तापरे जॉइन करी करी के मु सिखी जाइतली टिके सीए स्टार्टेड लर्निंग एमथे की 4-5 मास चलला परे सडनली दिने आसी गला सोवियत यूनियन जीवा पई अच्छा सेते बेले कोन होता सोवियत यूनियन गले आपण मन को कोठी की जिबे केते मास जिबे किछि कुआ जीवनी जिबे बस ट्रेनिंग पाई जिबे हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सो ताकू बरमपुर छाड़ी दी मु चलली सोवियत यूनियन आमर कम्युनिकेशन में एते भल न थाए सेते को गोटे चिठी मु लिखिबी जदी इट यूज्ड टू टेक मंथ्स 2 मास पटे लागु थाए पहुंचया पई फाड़ फुड़ होई की तारो आउ सेमते मु जे चिठीटे मिलु थाए मिलला को 2 मास 2.5 मास एमती सन सो सरी की वर्षे पर फेरी के आसली मु 13 मंथ्स थिला प्रथमटा मु थिली गोटे जगह कॉल्ड काचा सेवास्तोपोल होची नियरेस्ट सिटी जोटा क्रीमिया डिस्ट्रिक्ट रो यूक्रेन रे थिला सेते बेले जोटा एबे रशिया एनेक्स कर दीची माने तांको जबरदस्ती माडी की नहीं गला देयर इज अ हिस्ट्री दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर बिकॉज़ क्रूसेव जेते बेले तांकर बॉस थिला सी तांको डोनेट कर देथिला अदरवाइज ओरिजिनली रशियन लैंड ता पई मारपीट जो चलची वन ऑफ द बेसिस इज दैट सीडी ट्रेनिंग पर इंडिया आसिकी तापर चलला ऑल थ्रू आउट माय लाइफ आई वाज ब्रांडेड एज अ सोवियत हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट तापर रशियन एंड यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट तो एमती की चलला विथ डिफरेंट रैंक्स बहुत शिप रे इट इज आई वुड से लाइफ काफी डिस्टर्ब थिला काय माने हेलीकॉप्टर टा सब शिप रे गोटे शिप मेंटेनेंस पे पळेले हेलीकॉप्टर आ गोटे शिप को चल जाउ था एमते की फैमिली वाज देयर माय सन वाज बोर्न मु थिली अगेन सोवियत यूनियन रे सेकंड टाइम पे 3 मास पे जॉर्जिया रे थिली से मु जानि नथली मोदे केबे से तार जन्म हैला आई न्यू डिसेंबर 1987 10th I left she was due in mid Feb okay phone call nahi kichh nahi nothing finally when I was coming back from Georgia that time poti uli gote port ru एडन रु एम्बासी पाखरु कैप्टन बहुत भल थिले सी हम कोथा जाय कि फोन फान करी घरे कथा कि आस जा किंतु घरे फोन मध्ये न थाए सेते बेले सो बॉम्बे रे जण को मु फोन कली जणे सांग को तांकर गोटे थिला फोन ते लैंडलाइन से कहले हाँ सी मु जानी छी समथिंग गोटे डिलीवरी तो ही छी सी सेफ एंड साउंड बट एग्जैक्टली मु जानी पुओ की जीवा मु कहले चलो ठीक अछि सो कैप्टन गले सी पचारि अच्छा न्यूज यस सर द बॉय और ए गर्ल अकॉर्डिंगली गोटे बॉय पे गोटे छोटिया एमती एफिल टावर पर गोटे रखिथान गिफ्ट दउथान जार भी पुओ हबो आ गोटे कोन राउंड शेप रो कोन गोटे थाए जार झिया हबो से पचारले व्हिच गिफ्ट शुड आई गिव यू
କହିଲି sir I don't know. He says what do you mean? ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି କଥା ହେଇପାରିଲି କି she has delivered but I don't know what is a boy or a girl. କହିଲେ all right keep one each. India ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମତେ ଫେରେଇ ଦବୁ. ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି. So that is how life went on. India ଆସିକି continued ତାପରେ during Navy, how I was again slowly dragged into the adventure sports, I would like to mention there. Because otherwise, normal story in Navy, if I खाली କହିବି ଯଦି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, probably relevance ରହିବନି. So, ଯେତେବେଳେ ୱେଲିଂଟନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାଫ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ର ଆମକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚାଇନା ବର୍ଡରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା ସେଇଠି ଏକ୍ସପୋଜର ହେଇଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ତୱାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠୁ ତୱାଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେଇଠିକି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଏବାଉଟ प्रॉब्लम इन जो हाइट सांगरे अल्टीट्यूड रे तवांग जीवा आगु हम मानकर थिला गोटे जगह रे हम कराइतला एक्लेमेटाइजेशन कराइतला सो फर्स्ट टाइम आई सेड एक्लेमेटाइजेशन काई माने एंड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि हाउ प्रॉब्लमेटिक इट इज व्हेन यू कैन नॉट ब्रीथ लेस ऑफ ऑक्सीजन सो सेटा एक्सपीरियंस करली तापरटू आसिकी मु जतो वाइफ को कहले एमते जाइथलु से भला शी वाज ऑलवेज गेम एसु कथा रे कला माने मते एक्सपीरियंस करिवार अछि सेमती कहले अच्छा ठीक अछि केबे ओडे करिवा जेबे सो तापरे हमें बहुत उडे पास बुली की देखिलु से हिमाचल रे देन सिक्किम रे देन फाइनली वी वेंट टू वायना पिचू आल्सो इन पेरू अमेज़न फॉरेस्ट गुडा जगह बुली वाली की सब देखुथु. So I am telling you in short so that I save some time. So देखला परे in 2022 February आमे जाइथलु सिक्किम फेब्रुआरी से पास रे बुल्ला को सेठी गोटे जगह लिखा हैतला वे टू मानसरोवर तापरे सी सेड आमे मानसरोवर जाई परिबा. Then she was not keeping a very sound health, I would say सेते बेलकू सेत पे ता निजे केला नहीं मानसरोवर बदे जाई परिबेनी मु we will go to Everest base camp because she सबले से तार तिके करू थाए स्क्रूटनी करू थाए गोडा इंटरेस्टिंग गोडा आमे जाऊ थाउ गोडा कर. So that is what she had mentioned in so I said all right we will go someday. So that was there in the back of the mind. Acha, now that I'm talking about Navy, little bit knowledge about Navy I will give you because so that आपण माने जानि परिबे जो लड़ाई झगड़ा होउची चाइना रो साउथ चाइना सी की कोठी कोन होउची लाइक इंडिया को देखिबे जदी हमरो almost 7,500 kilometers of coastline we have got 5,000 plus kilometers on mainland ro another 2,000 kilometers on the island territory. So protect kariya pai we have got our submarines, ships and aviation. Entire Indian Ocean which is our interest, Bay of Bengal and Arabian Sea. That water is divided into many parts like territorial water. 12 nautical miles from the baseline is called territorial water. Amaro coastline ru jo vi jaga re jo thire ki you have got right above sea also in the air also ki nobody will enter. Then comes up to 24 nautical mile. Nautical mile is about 1.8 kilometers. So 24 nautical mile jaye huchi contiguous zone. Seithre we have got exclusive right on the seabed and surface but not in the space.
up to 200 nautical miles hochi economic exclusive zone. Beyond that is high seas. High sea means open for all. किंतु 200 nautical miles जाए जहाँ भी आमर resources अच्छी economic zone जो ना दिया ही थी सेटा को समझते whether it is oil all fish जहाँ मध्य सेठी अपन मान करो right अच्छी as per UN laws. अच्छा South China Sea रे कौन जे बहुत जगह रे सेमती when it becomes 200 nautical miles overlap ही होची गुड़ाए जगह रे जो country गुड़ा को close to each other रहला आमे शुणुचे एबे फिशरमैन आमरो श्रीलंका वाला नहीं गले श्रीलंकन फिशरमैन हमको आसी गले सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सेवन फिशरमैन माने जानू नांती वंदे कोटा केते कारो लिमिट भितरे अछि बोली सेइथरु सोडा सब होउची सेमती हो तापरे सेवन को आउथर नहीं के ओणा होची फेरेकी सो 200 nautical miles is quite a lot so navy रो सेटा गोटे फ्लेक्सिबिलिटी मध्य so navy ro flexibility in the sense so what through water you can go anywhere to anywhere and seit mein jabe bhi crisis ho ko what a foreign country right navy is sent immediately because they can go easily and reach that place so evacuation pain internationally otherwise also for flag showing you can go so bahut a goodwill visitor jauchandi so jai parive whereas for army or air force it is difficult that way navy ro movement re bahut flexibility achi so this is little bit about navy taro operation re I won't get into the operation details because appropriate habani kaya pai ଆମେ ତ ଟିକେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ loudly ଶୁଣା ଯାଉନି ନାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେଡିସନ ବିଷୟ ଟିକେ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯିବା କାରଣ ଆମକୁ 755 ସୁଦ୍ଧା 50 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 750 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଆମର ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଡିସ୍କସନ ପୁଣି yoga ଅଛି now I will now how I had just told you about the Everest thing introduced why this Everest thing came up okay it was there in the back of the mind but to clarify I went to the Everest base of the tolo jodi Everest arambha hochi not to the peak because eita hochi 17,598 feet base that whereas peak is 29,030 feet means it 12,000 feet basic माने आपण मन कहया पई कहूची कि जो माने सब पीक को जानती से माने हेलीकॉप्टर रे जानती बेस को just to spend days months to acclimatize themselves you need special gear to go climb up there are 4 more bases jai jai ki रही की से माने ऊपर को तापरे पहुंचंती अलगा ट्रेनिंग अलगा गियर्स अलगा everything अलगा oxygen cylinder they have to carry whereas base को oxygen cylinder is not allowed because that is the challenge you have to go without the oxygen cylinder if you need oxygen तुमको देबे किन तापर तुमको अब अलाउ करिवेनी सेठी पहुंचीवा पई तब आपनको तळकु नै आसीबो पड़िबो हेलीकॉप्टर की जोथरे मते सो सेटा होची डिफरेंस बिटवीन एवरेस्ट पीक एंड एवरेस्ट बेस कैंप नाउ केमती हमें आरंभ करलु आरंभ होला लाइक प्रिपरेशन वाज अबाउट 40 किलोमीटर्स हमर गोटे ओडिया गाइड थिला बेंगलोर रे मु से बेंगलोर रे थिली ओडिया पिलाटे थिला जा थ्रू रे हमें गलु सी खाली कहितला सर आपण 40 किलोमीटर्स इन ए वीक चलीवा दरकार एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स 2 times in a week without any break don't worry about timing but keep walking 10 किलोमीटर 2 दिन रे बाकी 20 किलोमीटर्स बाकी 5 दिन रे जेंति भी करी और जदी दिने ब्रेक नेबे बाकी 4 दिन रे आपन को 20 किलोमीटर्स करबे पड़ी लकीली आई वुड से मु सेतबळ को तापरे अमेरिका चल जाइतली ओ पाखो को सेठी जो लॉन्ग स्ट्रेच चलिया पे बहुत मिलु थाए सो चली प्रैक्टिस करी की हमें समस्त
पांच जन आम बाहरलु मु सबुठु मु एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट थी मोर ककई पुओ मो पीयूषा पुओ मो मामू पुओ आ पीयूषा पुओ को सड़ू मीन्स मोरलेस पांच जन ब्राह्मण सब बाहरलु जीवाई जस्ट ए कोइंसिडेंस कि आई ऑलवेज वांटेड टू गो कहला बेलू के समस्ते दे वर इंटरेस्टेड सो इट वाज ए काइंड ऑफ फैमिली वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर सो ସେଇଠୁ ବାହାରିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 12th of October ଆମେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ 12th of October କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଲୁକ୍ଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠିକି ବାଇ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ସୋ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଲୁକ୍ଲା ଗଲୁ एंड लकीली से तार प्रीवियस डे जाए फ्लाइट्स वर नॉट लैंडिंग देयर किंतु से दिन क्लियर हो गला आमे सब पहुंचलु स्टार्टेड वेल लुकला रे पहुंचला पर से एका दिन ही आमे गलु प्लेस कॉल्ड फाकडिंग लुकला इज 9186 feet and Kathmandu is 4600 feet. So almost double legala city itself by aircraft we landed 9186 feet. Seitu amku jibar chala 17598 feet. Okay. 8 din lagila just to reach there to tell you in brief. Luklalu there is another place called Fakding. That was 8700 feet. I mean, 3 घंटा रे, but they're not too much of climb, a lot of josh, greenery, roads were okay because you know तळुकु roads are okay. मझे मझे टिके गाँ फाँ थाए तेकी सही दिन हमें 3 घंटा रे 7.8 kilometers चलियो, but altitude we didn't cover much. Rather we went down also 486 feet down. Luklalu Fakding. Then next day, every day, we used to start around exactly 7 o'clock or some days 6:30, 6 depending on guide ketabala kouchi, and continue walking about 7, 8, 9 hours depending on the distance because आपन को सी नेक्स्ट पॉइंट पहुंचीबा दरकार से दिन जोठी के आपन को एकोमोडेशन थिबो बुक हेची बाय हुक क्रूक कोन लागुची कोन नहीं से दिन पहुंचीबा को पड़िबो फाकडिंग रु आमे गलु गोटे जगह कॉल्ड नामचे बाजार सेटा रास्ता रे सेटा होची 11286 feet so 2586 feet आमे से दिन कवर कलु हाइट हिसाब रे but distance is only 7 kilometers and it took about 7 hours. That was the first tough day experience, I would say. When we started thinking, have we taken the right decision? So anyway, I was very determined to do it. So, bhai banu ko सब खेंचवे को पड़ू था because समस्त you know tough हलालू को motivation level टिके कमी जाए जमती बोलते हो तापर next day we started from नामचे बाजार to a छोटा जगह गोटे called खुमजुंग बोली छोटिया जगह टे 12,434 feet and again 148 feet only climb कलू 2 hours basically that was for acclimatization ticket walk करके acclimatization करके से ऊपर को जाएगी सीढ़ी जाएगी खुमजुंग रे rest कर then tar next day Khumjungru Tengboche again 7 hours 9.2 kilometers 230 feet but that was the toughest day because di din ala chali saloni 3 din and Jose is going down and the terrain was very difficult although distance was not much terrain was very difficult acha sithre problem kon hochi apon ko site रे narrow ye re से या कोडा को सब चली हुए विराट से या कोडा को सेमाने आउ तांको सेमाने आसले टन घंटी बजे की माने सब आपन को कोडे छाडी की चल जीवा दरकार नल धक्का मुक्का मारी गडे देबे सब सो दैट वाज द डेंजर एम थे की देन टेंगबोचे डिंगबोचे एम
ना गुड़ाक very funny ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଥିବ। Then finally on the 9th day or 8th day we reached a place called Lobuse. Lobuse was 16,207 feet. That was just one day prior to reaching the base camp, which is close to Gorakshep. But ସେଇଠି କଣ ହେଲା, by then ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ weak ହେଇ ଚାଲିଥିଲେ, oxygen level was depleting. ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, level was every day, end of the day the guide ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର low ହେଇଯାଏ oxygen level, but ସେ କହୁଛି 70% and above ଥିଲେ, if you are walking fine ତାହେଲେ allow କରିଦଉଥାଏ। ମୋର ସେଇ ଜଣେ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ କକେଇଙ୍କ ପୁଅ, ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କର it came down to ଜଣଙ୍କ 65 and 62, they just couldn't breathe, couldn't get up। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ abandon କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା last but one day। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି ସେମାନେ। ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ତଳକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ, ମୁଁ, ମୋର ପିଉସାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ତାର ସଡୁ ଜଣ ଯେ ରାଞ୍ଚିରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ସେଇଠୁ ଲୋବୁଚେରୁ। the difficulty is the trek, there is no trekking, ଏଠି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପଡିଛି, ପଥର ଗୁଡାକ ପଡିଛି, ତାପରେ ଚଢି 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 find your own way। That is one. Oxygen level ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା କମି କମି ଯାଉଛି, fatigue has set in, and climbing up and the distance both are increasing. So gradually we used to stop. That is where my yoga practice helped me, because every probably not even 100 meters, 50 meter, 20 meters जाएगी, ମୁଁ ମୁଖ ଧୋତି କରୁଥିଲି, like blow yourself, bellows clear, take little more oxygen, then you start walking again। So ମୁଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, 3 ଜଣ ସାରା ସେୟା କରିକି ଚାଲିଲୁ। Finally on 20th of October we reached Everest base camp। I mean, I cannot express how we all felt। The अच्छी ମୋ ପାଖେ photo अच्छी, but I cannot share। Maybe I can send it to Himanshu, maybe you can publish the way it is convenient to you। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ योगा प्रति किंतु इंटरेस्ट सुना जाउनी हिमांशु, सुना जाउनी। हां नहीं, योगा प्रति इंटरेस्ट किंतु आसिला, आ योगा विषय रे वर्तमान हम ଟିକେ तापर डिस्कस कर। हां, so I have told you about it। 10 मिनिट रहला, 10 मिनिट में या so I'll speak for about 3-4 minutes, तापर तमर वाइंड अप ना कोन you can talk about 10 minutes, आ 10 मिनिट जाय हमें 52 जाय कर परिबा, 50 जाय कर परिबा। ओके, ऑल राइट, ओके, अरे कंफर्टेबल 50 आ 10 मिनिट हम डिस्कस कर परिबा। ऑल राइट। so ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ then coming down, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ୱାକ୍ କରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲାଗିଲା 2 ଜଣ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, we were feeling really dejected। ଆମେ କହିଲୁ we will also go back in helicopter only। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ରହିଲାନି। that was much simpler। 2 ଦିନରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ତଳକୁ ଆସିବାଟା easier। so we took the helicopter and we came back to Lukla। so that is how the Everest base camp experience is, that it is tremendous। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଇଠି କି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଯଦି, yes ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ବହୁତ simple ବୋଲି, but very challenging but doable। ଆପଣଙ୍କୁ mentally prepare ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, physically prepare ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ definitely କରିପାରିବେ। so ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ନେଭି ରେ I joined without any background। I had to compete with people all throughout who had all the backgrounds of Navy, generations of naval fellows who were there, but I never thought about that। ମୁଁ ମୋର କରି ଚାଲିଥାଏ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ। ମୋର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି କ୍ଲୋଜ ବାଇ କେହି ନଥିଲେ, କୋଉ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଏବେ ଯାଏ କିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି।
कि करिवे भी मत लागुनी unless somebody joins. Similarly, Everest Base Camp, again, this is all, we are all destined to do things. Jaha karibar achi ape ape things happen. ଆମେ 5 ଜଣ ଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରହିଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ବଟ୍ ହେଲାନି, they could not breathe. So now, what is the last thing that I have said about yoga? I have mentioned about yoga. So why did I କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲି yoga? Again, life ରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି yoga ଶିଖିବି, କରିବି, this that. September 2022, 4th September, I lost my wife, unfortunately. So life was tough, I would say. Life is tough, not was tougher. Probably now I have accepted it, so it is little okay. I have adjusted to life, but it is still tough. So I was completely shattered. Let me express that way. I am completely shattered, and I didn't know. I was not getting sleep. So first thing I did is, I was in USA where she passed away. Told my son, I must go back India को मु चली जीवी. से मना करतला, हम कहली नहीं, मते experience, I have to experience life जहाँ मध्य हबो, जेमती हबो, मते adjust करियो पड़िबो. एठी तो मु संगे सबले रही परिबिनी, सेइतपई मु इंडिया आसी गली. बट आसला परे मु रियलाइज कली इट्स बहुत डिफिकल्ट. घरटा बहुत बड़ नहीं जाइतले सेतबेले बेंगलोर रे गोटे इंडिपेंडेंट विला as madam desired. So suddenly the same house was, I was finding my मते निजगु सेठी एका लागु थाए, जुआडे गले असुविधा लागु थाए. I said suddenly I should कोडे करिवा दरकार. Of course, game sangare, then I said, let me start. Somebody just said ki casually, some lady, wife or friend jane pele iti gote yoga university achi, go and see how you can do. So mu sethi gali Zigni boli gote jaga achi, and se yoga university ro naam madhya hochi Swami Vivekananda Yoga Anusansthan Sanstha, S Vyasa University. तारो चांसलर होचुंदी एक्स नासा रो जने साइंटिस्ट डॉक्टर नागेंद्र ओली. इट्स अ वंडरफुल पर्सन. एनीवे, सेठी मु गली. सो आई थॉट आई विल स्पेंड गोटे मास सेठी गोटे योगा इंस्ट्रक्टर्स कोर्स हुए. जहां भी आपण करिवे ए कोर्स रा करिया पे 4 वीक्स रा कंपल्सरी. स्टार्टेड, बट age 68, 69, it's okay. Still, it's not very difficult. But some of the city, they were sympathetic as well as they were kind of helping me. They were, and I was doing well, I would say. Ete kharap nathila. But after almost 2.5 weeks, more shoulder what a dislocated shoulder thila. So this didn't take up any more load, especially is jo आमे सूर्य नमस्कार कला बेलू स्टार्टेड फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक प्रति संडे सूर्य नमस्कार होता है. 32टा, तापर 64टा, तापर 108. सो 64 तो सेकंड संडे कर देली जोश रे समस्त संगे. बट तापर शोल्डर गेव अप and with this I had severe high fever. I was admitted सेठी. I said nahi, eti hospital rahi ki esu karibi. By then it was only, tapare practice kari ki parikha dabar thala. I said, all right, now that I have learned. They said, okay, you go whenever you wish, you come back and complete. Join. So that was my introduction to yoga. Now, what did I learn in yoga? Basically, हमको yoga बोली कहला, हमको जो बहुत आपण माने समस्त जानी थी वे योगा टिके टिके जहाँ भी थ्रू केते जण बेसी जानी थी वे मु सिखुची. आई वुड से कि मु दे एबे सिखुची योगा एबे प्राय 2 वर्ष 1.5 वर्ष हलानी. सो इंट्रोडक्शन हला पारे मो आई एंजॉयड डूइंग ऑल दैट. सकाळु उठिबो प्रथमे 4:30 आई गेट अप.
योगा माने समस्त मोर जो इंप्रेशन जेमती थिला कि से कपाल भाती कर दबो कि अनुलोम विलोम कर दबो गोटे कर दबो कोन नो इवन करिवा पाई मध्य सबु गुडाए जिंस दरकार ता आगु गोटे सीक्वेंस थाए तो अपन स्ट्रेट अवे जदी प्राणायाम रे बसी जिवे देन यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली बिकॉज़ ता आगु क्रिया हवा दरकार बॉडी शुड बी क्लीन क्रिया रे सट क्रिया अछि योगा रे को योगा करिवे दैट इटसेल्फ इज द फर्स्ट क्वेश्चन काहे की योगा करिवे ओके योगा इज चित्त वृत्ति निरोध मीन्स आपन को स्टॉप करिवा दरकार चित्त मन वृत्ति डेविएशन निरोध प्रोहिबिशन सो डेविएशन ऑफ माइंड को प्रोहिबिट करिया पे योगा इज द क्योर कामनेस रहा पे अच्छा सेइतरे दीटा क्वेश्चन आछी आपण मन बहुत टाइप रो योगा सुनिथिबे पतंजलि योगा हाथी योगा आर्ट ऑफ लिविंग योगा एंड रामदेव बाबा योगा another बाबा जो कोयम्बटूर रे अछन ईशा फाउंडेशन योगा देन विक्रम योगा एंड आयंगर योगा बहुत अछि बेसिकली योगा इज टू टाइप्स बेसिक्स तापरे समस्त निज निजर टिके टिके कोन कर दोछन गोटे होउची हाथी योगा आ गोटे होउची पतंजलि योगा गोटे होउची फर्स्ट माइंड को कंट्रोल कले यू कैन कंट्रोल द बॉडी दैट इज द कांसेप्ट अदर होउची बॉडी को कंट्रोल करेगी माइंड को कंट्रोल करेगी किंतु जहां भी करिवे इट इज हाथी योगा इज लिटिल टफर hatha is sun and moon ha is sun moon is tha सेथमे से hatha yoga so energy and calmness तार गोटे बैलेंस रहा पे हाथी योगा एंड पतंजलि योगा रे अगेन से मानक सीक्वेंस होची यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान यू नो तापरे शेषरे समाधि सो एमती अलगा मानकर क्रिया क्रिया रे केते गुडे क्रिया अछि जोडा को आपन को खाली क्लीनिंग करिया पे बॉडी क्लीनिंग पे सेतरे धोती वेस्ती नेती नेउली देन त्राटका आई पाई कपाल भाती उडा सो बॉडी क्लीन करिके देन यू गेट इनटू प्राणायाम प्राणायाम रे मध्ये गुडाए सीक्वेंस अछि जोटा कि शेषरे ओमकार आगो ओम रु आरंभ करिवे बट यू फिनिश विथ ओमकार इनिशियली ओनली बहुत जुड़ा अछि सो गुडा कहबे कहि परिबेनी टाइम नाही बट आई विल जस्ट से कि मेन थिंग होची आपन को योगा रे जानिबा दरकार क्रिया जहां भी करिवे क्रिया करिवा दरकार बॉडी प्यूरिफिकेशन देन कम्स प्राणायाम देन कम्स आसन देन कम्स मुद्रास देन कम्स बंधस ए सब गुडा को टिके टिके जानी की करिवे जदी एंड खाली एमती कर देले होबनी टिके जानिबा दरकार कोन केमतीटा करिवा दरकार आपन जदी सेइथरे परफेक्टली करिवे ताले ही तार वैल्यू अछि एंड मु एबे मध्ये पढुची गुडाए जिंस पढुची आपन देखै परिबे एटी बही सब अछि मोर से बही उडा सब नै की पढुची करूची समस्त को प्रैक्टिस करूची बहुत I am enjoying it. So that brings calmness to me, and that probably has allowed me to settle down with my situation in life. So, setiki kaibi time बोधे गलानी हमरो हाँ हिमांशु I think time no हाँ हाँ टाइम हेलानी आमे हाँ एठी मध्ये कहि रखे आमे आम विवेकानंद लोक संसद सकाळ गोटे कार्यक्रम हुए हाँ आयुर्वेद भगवत गीता बोली सब दिन हाँ 5:30 रु 6:30 हुए हाँ से आम 12-13 मिनिट आम योगा प्रैक्टिस करा जाए अच्छा तापर आमर सबुदिन 2टा बा 3टा भगवत गीतार श्लोक पाठ हुए ओके आउ आम दर्शक मान को आउट जनइबी जे आमे मध्ये एठी हरियाणा रे सकाळु मॉर्निंग वॉक कर सारला परे हाँ हाँ बसिकरी कला परे जगदीश को आमे हम गुरु करिचु तो जगदीश संगे आमे 10-12 मिनिट भी एठी योगासन प्रैक्टिस करू सो वी आल्सो कॉल हिम एज योर योगा गुरु आल्सो we enjoy that so बर्तमान मु एठी कहबी जे समय हे गलानी तो आमे एठी
आम डिस्कशन को ये बंद करवा किंतु ये बर्तमान दर्शक मान भर किए कह किसी प्रश्न थाए दे कैन आस्क आम आउ 2-3 मिनिट डिस्कस कर वी कैन एक्सटेंड द प्रोग्राम फॉर अनदर 5 मिनिट्स बहुत बहुत थैंक यू समस्त को धन्यवाद आपण माने सुनिले किए किसी पचारि पारंती हाँ यदि मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम कार किसी प्रश्न अच्छी सर मोर गोटे प्रश्न थिला एक्चुअली टिके हाँ मु जानियो चाहूतली जेहेतु हाँ आपण बिलोंग करथले नेवी रो हाँ सर तीनटा विंग अछि डिफेंस रो दैट इज आर्मी नेवी एंड द एयर फोर्स हाँ सो हाँ which one is better for in point of doing a service a person ମୁଁ ନେଭିରେ ଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କହିବି ନେଭି ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି but no that is just as a humor but I will tell you one thing any service you join serve with devotion that is the first thing and I have seen other services also from close uh, all are equally difficult depending on what and where you are. Like I have been to Arunachal border, right, China border when I was doing both, Wellington Ramar Road, mid-level course हुए, Lieutenant Commander हिसाब से जाइथली. I got respect for army fellows. ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ एयरफोर्स रो एयरक्राफ्ट गोटे लैंडिंग ग्राउंड कराई जाउची से जो मेटल स्ट्रिप गुडा को अनरोल कराई जाउची से माने चावल डाली आनी की लैंड कले सेठी से माने खाउचंदी से आर्मी जवान माने खाली से माने खाउ नांदी से आखपाख विलेज रो लोक मान को मते से माने दउचंदी से चावल डाली आज यदि आपण चावल डाली जे पर तांकर अछि से दिन जाय से हिंदुस्तान जिंदाबाद करछंती जो दिन सरी जाउची चाइना जिंदाबाद ही जाउची से बहुत difficult. Sabu service ठीक अच्छी. It's serving the nation really. Otherwise, it is all three services are equally tough, equally respectable. से आई कही परिबे आओ. sir thank you sir गोटे जिज्ञासा थिला हाँ गोटे जिज्ञासा थिला प्रत्येक मनुष्यर गोटे लक्ष्य थाए विदेश भ्रमण एपरिकी एवरेस्ट आरोहण मध्य जीवन लक्ष्य आपण जोटा कि एचिव करने चेष्टा कर बहुत मात्रा सफल किंतु जीवन शेष पर्याय वर्तमान आप जो योग प्रति आकृष्ट कले योग आपन को केते सैटिस्फैक्शन दउची से विषय कौन आवश्यकता जीवन से विषय टिके था सूचना दियो हाँ मु जेमती कही लाइक मु एबे एका रोची वाइफ पास देवे चली गले सेइथि तापरे आउ एबे पूरा फ्री मु एक्चुअली ता आग जाए कंसल्टेंट हिसाब रे काम करथली एविएशन कंसल्टेंट हेकी किंतु एबे मु काम धाम करबा को इच्छा होनी रेफ्यूज अच्छा नाउ एते जो टाइम अछि कोन करि परिबा हमें सो सेइथि आई सेड कि गोटे कोन नुआ जिंस मु सिखे अच्छा गोटे कथा होची सिखिबे द्वितीय कथा होची अगेन बहुत इंपोर्टेंट कि निजर हेल्थ जे पर्यंत मु अछि मु बर्डन केमते हेबनी मो पुओ ऊपर एटलीस्ट हेल्थ वाइज मु निजे चेष्टा करी एटलीस्ट सेउडा मोर ड्राइव थला दैट वाज माय मोटिव टू लर्न सेथ में मु योगा पे करूची योगा पे गली एंड योगा कला पारे आई हैव रियलाइज आई एम मच मोर फिटर एंड हेल्दियर टचवुड मु लाइक हिमांशु देखी चंदे मु एवे खेलुची आई एम नियरिंग 70 बट मु संध्या बेले इवन 17-18 year old पिला मानक संगे मुझे खेलुची बैडमिंटन फॉर आवर्स 1 hour almost so तापर आमे हिमांशु मु टेबल टेनिस खेलुचु आई एम फिट आई फील फिट बट केते दिन रहइबो कोन हबो तो जानि नै बट योगा gives me mental calmness mental health and physical fitness right so I am very happy with it थैंक यू सर
तेणु समय तो हो गलानी एति शेष कहबी जगदीश एक्सपीरियंस शुणवाटा आम निश्चित भाव गोटे एडवेंचरस स्टोरी भितर बही पढ़ला भाया लगुए बहुत शिक्षार अच्छे अबाउट हाउ टू फेस द लाइफ आउ जगदीश एक्सपीरियंस कहले से गोटे जिन आरंभ कहले डेस्टिनी गोटे जिन थाए आम निमित्त मात्र जहाँ गीतार सबुदिन आम सकाल शुणुचे से डेस्टिनी ता बाटे आमको निश्चय नहीं जीव कि आमर कर्म कर स्पृहा दरकार आग्रह दरकार एवं प्रति मुहूर्त को प्रेजेंट को एंजॉय करवाटा हूँ बड़ जिनस अतीत को लेकिन म्रियमाण हवानी भविष्य को लेकिन बेसी टेंशन नवानी प्रेजेंट टाक रही समस्त शुभ मानसिक रहा से ही जगदीश को शिखार अच्छी सो जगदीश थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को तापर जदि कार किछि क्वेरी थिबो आपण डायरेक्टली मते पचारि परिबे मु अछि कहबा पे तेणु ये बर्तमान प्रोग्राम को शेष करने प्रदीप को अनुरोध करी आ समस्त नमस्कार समस्ते मन देख शुणिले मैं बसले एंजॉय कले धन्यवाद जगदीश सर धन्यवाद हिमांशु सर समय बंधा 8टा हो गलानी मु खूब जल्दी आशीष राठौर सर को अनुरोध करी से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे तापर हम शांति पाठ करी आम सभा को आज ज्ञापन सारी आशीष बाबू आशीष सर आशीष राठौर जी मुख्य अतिथि सर शुणी पार्चंती हाँ शुणु हाँ कौन से समस्त को नमस्कार आज अंतरंग आलाप उपस्थित आमर सहित आमर मुख्य अतिथि अवसर प्राप्त कमोडोर जगदीश महापात्र सार को नमस्कार आमर आलापक डॉक्टर हिमांशु शेखर मिश्र आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद खोर्धा जिला शाखार सभापति सार को नमस्कार एवं अन्यान्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद समस्त सदस्य जो माने आम सहित आज कार्यक्रम उपस्थित अच्छा समस्त को नमस्कार करी आज ये कार्यक्रम अंतिम पर्यायर धन्यवाद देवार जो सुजोग मत मिली से मु कृतज्ञ आज यही कार्यक्रम रे आम सहित उपस्थित रही जीवन जीवार शैली विषय रे सार आमको शिक्षा देइचंती एथिरे आमे समस्ते उपकृत होइछे जो युवक भाई भौणी माने आम सहित जोग देइथिबे से माने निश्चित रूपे हिमालय र शिखर रे केमती पहुंचीबार आग्रह सारंकर रही से विषय रे सार जो कहिथिले ताकू निश्चय प्रेरणा जोगाइथिबो समस्त को तेणु सार को अशेष अशेष धन्यवाद धन्यवाद देवा आमर सभापति हिमांशु शेखर मिश्र सार को सार प्रश्न पचारिबार शैली अति उत्तुंग थिला सार को धन्यवाद आमर ए कार्यक्रम रे आम सहित उपस्थित रही निजर समय देइचंती एवं आम सह सहयोग करिसंती तेणु समस्त को धन्यवाद धन्यवाद राठौर सर आशीष राठौर सर मु एबे सुनीता मैडम को अनुरोध करी से शांति पाठ ज्ञापन करेंगे नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 धन्यवाद सुनीता मैडम आजिकार ये 48तम अंतरंगालाप को आम ये रखुचे मु नमस्कार नमस्कार सर आप म्यूट अच्छा सर खोर्धा
खोर्धा जिला तरफ आमर जो मैंने अच्छे आमर बाकी आमर आजीवन सदस्य जो मैंने रहा टी डिस्कस करवा थी तेणु बर्तमान आमर जिला शाखा आमर खोर्धा जिला शाखा तरफ आम डिस्कसन कर प्रदीप बाबू आप आरंभ करूँ रामचंद्र सार भी अच्छे प्रलय सार भी अच्छा प्रलय सार राम सार को आम अनुरोध कर समस्त को नमस्कार। आज खोर्धा जिलार कार्यक्रम अति सुंदर लगिला। जीवन लक्ष्य जे विदेश भ्रमण अमेरिका पर्यंत जाई एवं एवरेस्ट पर्यंत जाई शेष जोग को आदरी नहीं निजर जीवन शैली रे खूब सुंदर लगिला। मु जगदीश सार को निवेदन करी आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद निज केवल देखे ना सी समाज किसी देखु थाए। समाजर बहुत संगठन अच्छी जे कि गोटे गोटे निर्दिष्ट काम करथांती किंतु स्वामी विवेकानंद लोक संसद बहु गुड़िए काम हाथ को नहीं आपणकर सकाळ संध्या जो स्वाध्याय कार्यक्रम सकाळे होची संध्याळे प्रति जिला तरफ ओडिशा रे 30टा जिल्ला 30टा कार्यक्रम होची एवं 31 तारिख रे वेस्ट बेंगल मध्ये कार्यक्रम होची बंगला रे मो गाँ तरफ विभिन्न कार्यक्रम होची मो गाँ यूनिट तरफ शिक्षा संस्कृति परिवेश स्वास्थ्य संबंधी सचेतन संबंधी एवं कला उत्कल कला संस्कृति प्रतिष्ठान अच्छी साहित्य एवं प्रकाशन संस्था अच्छी विवेकानंद युव संसद गोटी अच्छी संबंध सेतु अच्छी अन्य जो अनुष्ठान मान सहित संपर्क स्थापन करने एभली बहुमुखी कार्यक्रम अच्छी निकट अतीत मु निवेदन करी प्रदीप भाई से सूचना देवे जे गत मासे 1.5 मास तले आम परिवेश सब यूनिट तरफ जो वृक्षरोपण कार्यक्रम आरंभ करूँ सेटा प्राय सबु जिले में खोर्धा जिले में कौन अग्रगति से विषय प्रदीप भाई कहे जगत सार को निवेदन करी यही गोटे विशाल जो संस्थार परिकल्पना कर बहुत गुड़िया कार्य हाथ को नि समाज आमको बहुत किसी देछि आम निजे निजे एभली भाव में बड़ हो गलु किए प्रोफेसर हो किए डाक्तर हो किए इंजीनियर हो आपण जीवन शीर्ष स्थान में पहुंची पारिछंती तेणु समाज प्रति आमर किसी कर्तव्य अच्छी तेणु आमको आमर यही संगठन रे आपण को निवेदन आपण संगठन को किसी साहाय्य करंतु किसी माने सदस्य आजीवन सदस्य ही किसी सेवा करिया पई आपण आमको स्वीकृति दियंतु एतिक निवेदन सार के पाखरे प्रवीर भाई आमर वृक्षरोपण विषय कौन कहे आउ जने बंधु अच्छे श्री सुदर्शन महाराणा सर नमस्कार सर आपन नमस्कार कर वेलकम गुड आप जॉइन कले मु देखली परे भाई मु सुनुतली हां ना ना अपन हां सर मोर सीनियर थे सर भी जूलॉजी ये थे से सर एक्चुअली हमर गेस्ट हवा कथा दिथर हला से तांको व्यक्तिगत असुविधा होछि तुम सर जॉइन करबन सर फ्यूचर पे आसन थर के आपन को सुनिबा सर सुदर्शन सर आपन को आसन मास सुनिबा सर सुदर्शन सर को ऑलरेडी अर्थ रखी सर विषय खाली शॉर्टकट रे कहबी सर होचंती हमर जो घड़ियाल प्रोजेक्ट बर्तमान जो रिवाइव होईची सर तार होचंती मुख्य कार्पेटदार आउ तांको से जो महाराज जो घड़ियाल ये ऊपर तांकर बहुत अवदान अछि तो सर से विषय नेक्स्ट आराम मास 13 तारिख रे सर को आम देखिबो हमर अतिथि हिसाब रे सर मोर बड़ भाई भलिया एकाठी आम खल्डुकले थिलु सर भी भुवनेश्वर रहउचंती तेणु हाँ ये प्रदीप बाबू कहला आगु सर टे कहबी आम एक्चुअली प्रदीप बाबू काम टे बिजी होती तो आम ये वृक्षरोपण कार्यक्रम किसी करूँ गला मसरे जहाँ हवा कथा तो प्रदीप बाबू तो आप टे आलोकपात करूँ आ बोधे से मुझे रेस्पन्सिबल कारण मुझे कोर्डिनेट कर मोर टे पर्सनल प्रोब्लेम एपट होती से मुझे कोर्डिनेट कर पारनी प्रदीप बाबू आप निज ओपिनियन दिंतु रामचंद्र सार दीपद कहला बंद कर अच्छा नहीं सर वृक्षरोपण बाबद मुझे कहूँ चाहूली जे भुवनेश्वर जगह खंडे पाइबा कि कौन पर्टिकुलर स्कूल को अनुरोध करके जगह नहीं काम करवा गोटे बड़ डिफिकल्ट टास्क एक कथा द्वितीय कथा आम तरफ से इनिशिएटिव निया नहीं जाई नहीं कहीं जहाँ को माने कुआ जाइथिला माने हमर मन पड़ुनी चित्त मत नंबर देथिले
से रोचंती चंद्रशेखरपुर रे सी कहते जे इनिशिएटिव नेबे बोली कॉलोनी रे लगेवा बोली कथा होता गछ लगेवा तेणु तापर सी मत फोन करना तापर मु भी व्यस्त हो गली मोर एक्चुअली जेहेतु ऑफिस काम रोची मु पूरा व्यस्त हो जाइए जदि सर आपण किसी गाइड करे परिवे हमकु नले न काकू जदि टिके लीड करे देबे सो दैट आई कैन हेल्प देम मु एक्चुअली निजे लीड करेबा मते संभव हेई पारु नाही ठीक अछि पूर्व संभागर संपादक अछंती डॉक्टर रामचंद्र पल्लई सर सर को रामचंद्र निवेदन सर दीपद कहिबे सर सात दीपक कौन रामचंद्र सर समस्त को मोर नमस्कार प्रथमे कहबी आज वक्तव्य बहुत कथा हमको शिखेला आम जानिले एवं जहाँ प्रलय सार कहले जदि आम जोग अधिवेशन कौन दिन भी आह्वान करती से पाखर जहाँ एक्सपर्टीज अच्छे आमको शिखेबे भल लगे आउ सुदर्शन सार जो अच्छा जदि आम परवर्ती समय मसे नेक्स्ट मीटिंग रे सुनिबे से शुभ समयटा डेरी आसीओ बहुत भल कामटा डेरी हुए तेणु सार को दिमास आम फिक्स करूँ कि फर सम रिजन लास्ट मोमेंट पुणी बदल पड़ुची कि नेक्स्ट मंथ आम निश्चय सुदर्शन सर को आम गेस्ट हिसाब से पाऊँ I can assure you sir मैं समस्त को मैं समस्त को मैं शुभ संध्या संगे नमस्कार करुच्ची जे मु निजको ए विषय केमिति संपुक्त करि पारिबी से मु चिंता करि पार नथिली काहेकि आम गोटे वन जीवन संरक्षण भूमि संरक्षण ये आपन को आनंद दे पारे किंतु जो जोग भितर ये जो संस्था भितर आ प्रासंगिकता कौन तेणु मुझे संध्यान थी एणे जदि आप शुणा चाहूँ जीव संरक्षण उपर विलुप्त प्राय कुम्भीर जगत उपर जीवन उपर ठीक अच्छे अनुभूति शुणु विषय आमर जो साधारण ज्ञान आमर भी किछि बढ़िबो आमे that will अनेक have जिनिस an जानि adventurous journey for us sir आउ सुदर्शन सर मने मो हमर मेंबर करिया पे हमर लाइफ मेंबर भी सर को हेबे सर सकाळ भी जदि उठचंदी आपण हम प्रोग्राम मु लिंक पठे आपण सुनंतु भल लागे मु सकाळ 5टा सुधा उठी जाए सर ताले 5:30 का मु आपण आज लिंक पठे देबी आपण काली सुनंतु भल लागो गीता पाठरा आपण बहुत भल मु सेठु मुळु से नहीं जगदीश कथा मैं शुणुଥିଲି